something's changed. See His glory, feels like heaven on earth. ಕರ್ತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನನಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ಹೋದ ವರ್ಷ ಹರ್ನಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಆಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ದೇವರ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಿದ್ರಿಂದ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಕಾಲು ಎಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚರ್ಚಿಗೆ. Praise God. She could not walk properly. She had muscles were all aching. Today the Lord healed her. Come on, give the Lord a clap. ನಾನು ಇವಾಗ ಬಂದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನರಗಳೆಲ್ಲ ನೋಯ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. Come on, people, give the Lord a clap and praise God. ಅಣ್ಣ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿ. ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಲೆಲ್ಲ ನಡುಗಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗಿ ಎಳೀತು. ಎಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜುಮ್ 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 ಅಂತ ಹೋಗ್ದಂಗಾಯ್ತು ಕಾಲು. ಇವಾಗಲೂ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ. She had severe pain in joints. She felt like a hot breeze hitting her, and the jum jum feeling came and all the pain left her. Hallelujah. Come on, let's give the Lord a clap and praise God. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಚರ್ಚ್. ನಾನೊಂದು 25 ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಈ ಬೆರಳು ತುಂಬ ಏಟಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೀಲ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದರೂ ಪೇಯ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಂದಾಗ ಪಾಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅದು ಬಿಳಿವಿಂದ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಳ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಇಳ್ದಂಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕೈ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪೇಯ್ನ್ ಹೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್. Hallelujah. She met with an accident 2 months ago, and her thumb, she could not use the right thumb. She could not use it. She could not bend it. Today the Lord touched her. Her right thumb started bending after the thumb. Come on, let's give the Lord a clap. John 16, we'll read from verse 1 onwards. These things have I spoken to you, that you should not be offended. If you read the Gospel of John, अगर आप सुसमाचार यूहन्ना को सुसमाचार पढ़ेंगे, the longest discourses that Jesus had disciples with the disciples is John 14, 15, 16, 17. सबसे ज्यादा समय तक यीशु मसीह ने अपने चेलों से जब बात करी है तो वो यूहन्ना के 14, 15 और 16 अध्याय में 3 chapters 14, 15, 16 he talked to disciples. Chapter 17 is the entire chapter is a prayer which I call as the Lord's Prayer. और 14, 15, 16 में यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात करी, और 17वें अध्याय में मैं कहता हूँ कि ये प्रभु की प्रार्थना है. Generally people call our Father in heaven to be the Lord's Prayer. I don't call it Lord's Prayer. I call the disciples' prayer. This is the Lord's Prayer. और अमूमन लोग कहते हैं कि हे हमारे पिता, वो प्रभु की प्रार्थना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यूहन्ना 17 ये प्रभु की प्रार्थना That है. our Father who is in heaven, that's a prayer he taught the disciples how they should pray. और हे हमारे पिता, ये वाली प्रार्थना उसने अपने चेलों को सिखाया था कि कैसे प्रार्थना करना. John 17 is the Lord's Prayer. और यूहन्ना 17 जो है वो प्रभु की प्रार्थना है. So when Jesus speaks on John 14, 15, 16, if you read them carefully, अगर आप 14, 15 और 16 को ध्यान से पढ़ेंगे, it's amazing. In the 14th chapter, first verse, it begins like this. और 14 अध्याय का पहला वचन इस प्रकार कहता है, Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो. You know, he's going to tell them, after spending with them for 3 years, he's going to tell them, I'm going to die now. They're going to arrest me. I'm going to persecute. I'm going to be tortured. I'm going to die. I'm going to be buried. You know, he's giving them the most tragic news the disciples could ever hear. और 3 साल उनके साथ चेलों के साथ रहने के बाद प्रभु यीशु मसीह एक बहुत दुखद समाचार उनको सुनाने जा रहे हैं कि मैं मारा जाऊंगा, सताया जाऊंगा और क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा. And he's about to give them such a tragic news to disciples that their master will be betrayed before them. Their master will be crucified. He will die. He will bury. You know, he's giving them such a tragic news. और बड़ी दुर्घटना का समाचार उनको वो देता है प्रभु यीशु मसीह कि मुझे मारा जाएगा, सताया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा. And before giving the news, और समाचार देने से पहले he told them, उन्होंने उससे कहा, let not your heart be troubled. तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो. That means whatever may happen,
you should not allow that to trouble your life. कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना हो, उससे आपके हृदय को परेशान नहीं He होना did है। not say, I will not allow your heart to be troubled. उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं तुम्हारे दिल को He said, परेशान you should not let your heart to be troubled. तुम अपने हृदय को व्याकुल मत होने दो। That means इसका मतलब keep your emotions in your check. और आपके जो इमोशंस है उसको अपने कंट्रोल When में you रखें। hear all this news that's going to happen, it can disturb your emotion. और जब आप ये सब समाचार सुनते हैं तो आप भावनाओं में बह जाते हैं। So keep your emotions in control. अपनी भावनाओं को अपने अपने कब्जे में रखें। Don't allow your heart to be troubled. अपने हृदय को व्याकुल न होने You know, दें। I always say this to you. और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, Emotions are like wild horses. और भावनाएं जो है वो एक घोड़ों के समान है जो You जंगली know, when घोड़े you हैं। ride a horse, जब आप एक घोड़ा चलाते हैं you have a lagam in your hands. तो लगाम आपके हाथ में होती है। That day you feel, the moment you feel your horse is losing you're losing control over the horse. जिस दिन आप ये महसूस करते हैं कि आप घोड़े के ऊपर अपना कब्जे को छोड़ रहे You हैं, better jump from the horse. तो आप उस घोड़े से कूद जाएं। Once the horse loses control, you know, it will go everywhere. जब एक बार आपके हाथ से लगाम छूट जाती है तो वो घोड़ा कहीं भी जा सकता है। Once your emotions are out of control, it can make you do anything in your life. अगर भावना आपके कब्जे में नहीं तो वो आप कहीं भी ले जा सकती हैं। Emotional disturbances break husband-wife relationship. और भावनाओं में जो गलबली होती है वो उसे पति और पत्नी के संबंध खराब होते Emotion हैं। disturbance that breaks relationship between parents and children. और भावनाओं के कारण से माता पिता के और बच्चों के बीच में गलबली होती So the है। Lord is speaking to disciples, John 14, 15, He spoke about all He's going to suffer, everything. और 14 और 15 में उसने अपने चेलों को बताया कि वो जो परेशानियों से गुजरेगा। I'm going to share with you only for a short time an introduction which will continue other Sundays to come. और मैं एक छोटे से सारांश में आपको बताऊंगा जो मैं आने वाले दिनों में आपको सिखाऊंगा। I know, I'm a Telugu man. मैं एक तेलुगु व्यक्ति So I हूँ। used to watch Telugu movies a lot. मैं बहुत तेलुगु पिक्चर देखता हूँ। In Telugu movies I used to watch, always the hero is introduced in a very stylish way. और उसमें हमेशा दिखाया जाता था कि बहुत स्टाइलिश तरीके से हीरो The आता car है comes, और कार आती है the door opens, और दरवाजा खुलता है and first a leg will come out of the car. और उसके बाद पैर बाहर आता है The moment leg comes out, dust comes out, like this. और जब जैसे ही पैर रखते हैं तो कुछ धूल And उठती then the है camera goes from leg on, they'll show the body, and all the viewers sitting in the theater whistling, wee, 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 looking at it. Because the way they introduce the hero is important. और इस प्रकार से हीरो को वहाँ पे परिचित So किया जाता था। today I'm going to introduce you the hero. आज मैं उस हीरो को आपको परिचित कराऊंगा So just today's service will be only introducing the hero. और सिर्फ आज हीरो का परिचय And होगा coming Sunday, whole year you will see the work of the hero. और आने वाले संडे में आप देखेंगे कि उसके काम को। Hallelujah. So come with me to John chapter 16. और यूहन्ना उसका 16 अध्याय, John 16. यूहन्ना 16। These things are spoken to you that you should not be offended. ये बातें मैंने तुमको इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। They shall put you out of the synagogues. Yeah, the time comes that whosoever kills you will think that he is doing God a service. वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हारे मार Do डालेगा। one thing, put American Standard throughout now. They will make you outcast from the synagogue, but an hour is coming. For everyone who kills you, think he is offering service to God. When you kill a believer, you're serving God. जब आप एक विश्वासी को मारते हैं तो आप उस परमेश्वर की सेवकाई Next करते हैं। verse. These things they will do because they have not known the Father or me. Continue. But these things are spoken to you so that when their hour comes, you will remember that I told you of them. These things I did not say to you at the beginning because I was with you. That means, you know what the Lord is saying is this. If you look at the Bible carefully, 3 years Jesus was with the disciples. But you don't see anywhere disciples being persecuted. It's always Jesus who was persecuted. You never read one verse where Pharisees spoke against disciples. You never read one verse where anybody said anything wrong to disciples. Their hatred was only on Jesus. The speciality of Jesus is, while he was there, he protected the people such a way that they should not be troubled. I will take it in my life. The Lord was the protector of them, right? Now put the scripture. So these things I did not tell you at the beginning because I was with you. मैं था तेरे साथ तुझे प्रोटेक्ट करते हुए इसलिए मैं तेरे को नहीं बोला,
Right? Next verse. But now I'm going. But now I'm going. लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, I took care of him all this time. इतने समय तक मैंने तुझे संभाला, Now I'm going. मैं अब जा रहा हूँ, I'm going to the one who sent me. मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने Now मुझे I'm भेजा। going to him who sent me. अब मैं उसकी मेरे भेजने And वाले none के पास of you जा रहा हूँ। asked me, where are you going? But because I've said these things to you, sorrow has filled your hearts. Though the Lord said in the beginning, don't let your heart trouble, they allowed the heart to be troubled, sorrow filled their heart. Right? Now they're wondering, oh, Jesus protected, now he's going away. Who will protect us? Who will take care of us? We become orphans now. Now what happened to our lives? Okay, continue. But I tell you, I'll ask you a question. Look at me. Look at me. If I ask 95% of the believers today one question, would you prefer Jesus present in front of you bodily, or would you prefer the Holy Spirit? And people will say, I want Jesus present bodily. Imagine Jesus coming through the windows, through the closed doors, through the walls. He's coming, he's walking on the water, he's stopping the storm and all that. We would prefer him. Hello? Yes or no? We would prefer him, right? But now Jesus is saying, I'm going away. Disciples, oh my God, then what's going to happen to us? Then he said like this. He said, put the scripture. He said, but I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. Oh my God. That means it is more advantageous Jesus going away than Jesus staying. Hello? You are happy I'm walking through the walls. You are happy I'm walking on the water. You're happy I stopped the storm. You're happy I raised Lazarus. You're happy I multiplied the food. You're happy I did now. But your advantage is not when I stay. Your advantage is when I go. What is the nonsense you're talking, Lord? How can it be? We are crying you're going. And you're saying it's my advantage that you go away. Look at that. But I tell you the truth, it's an advantage that you go away. Why? For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. He's saying, I'm here. Until I am here with you, he won't come. The Holy Spirit won't come. Once I go, I will send him. That means it's more awesome to have Holy Spirit than Jesus in a body form. Hello. We want to see Jesus physically present. Oh, how I wish I was like disciples seeing Jesus. Yes, and there is some Asia. He say, maybe could choose sakta. Then Jesus said, that's not your advantage. Advantage is when I go. When I go, I will send him to you. The helper will come. The word there, so beautiful. The word helper in Greek. यूनानी भाषा में Parakletos. पैराक्लिटस करके शब्द The है parakletos has two meanings. और इसका दो मतलब है पैराक्लिटस के। One is para. एक है That is पैरा, klita. दूसरा क्लिटा। Lita. We have a sister Lita. The word Lita in Greek, in Latin means joy and happiness. All this. The word Lita in Latin. और लैटिन भाषा में लीटा व शब्द का अर्थ है भलाई या But in Greek, लेकिन यूनानी the भाषा meaning में of the word Lita. लीटा शब्द का मतलब Lita है is curse and sorrow. और लीटा का मतलब है श्राप और दुख। The meaning of the paraklita is the helper to redeem from the curse. और पैराक्लीटा का मतलब है कि आपका सहायक जो आपको श्राप से निकाले। I am sending you somebody who will help you to redeem you from all the effects of the curse in your life. और वो ये कहता है कि मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सारे श्रापों से छुटकारा दिलाएगा। You see, Moses brought them to the promised land. और मूसा उन्हें उस वाचा की जगह में लेके आया But था। Joshua divided the inheritance. लेकिन यहोशू ने उनके सारे वंशों को बांटा था। Yes or no?
Similarly, Jesus bought us the inheritance. और यीशु हमारे लिए जो है वो सारी But the Holy Spirit will divide the inheritance. लेकिन पवित्र आत्मा उन सब चीजों को बांट देगा। That is why इसीलिए we are not Joshua generation. हम यहोशू की वंश नहीं हैं, We are the Holy Spirit generation. हम पवित्र आत्मा की जनरेशन हैं। Joshua did not do any good to you and me. यहोशू ने आपके और मेरे लिए कुछ भला नहीं Joshua किया। helped Israel. यहोशू ने इस्राएल की मदद की Joshua helped Israel to gain the inheritance. और यहोशू ने इस्राएल की मदद करी ताकि उनको उनकी संपत्ति मिल सके। But the Holy Spirit लेकिन पवित्र आत्मा helps us हमारी सहायता to करता है enjoy the inheritance provided by Jesus Christ the Lord. और यीशु मसीह ने जो संपत्ति हमारे लिए रखी है ताकि हम उसका लुत्फ उठा सकें। That's why it's called as Paracleto. That means the helper. Is the English called helper, but the actual meaning is the one who helps you and redeems you from the curse. लेकिन इसका मतलब ये है कि वो जो आपकी सहायता करता है कि आपको सारे शापों से बाहर निकाले। Hallelujah. Jesus said, when I go, यीशु ने कहा जब मैं जाऊंगा I'm going to buy the inheritance for you. और मैं सारी संपत्ति तुम्हारे लिए ले लूंगा I'll die on the cross. I'll purchase inheritance for you. और मैं क्रूस पर मरकर सारी संपत्ति तुम्हारे I'm लिए going to go खरीदूंगा। up. मैं ऊपर जाऊंगा। After going there, ऊपर जाने के बाद I'm going to send you somebody else. और ऊपर जाने के बाद मैं किसी को भेजूंगा आपके And लिए he will come and divide the inheritance for you. और वो आकर सारी संपत्ति को आपके बीच में You बांट know, people tell देगा। me, no, I prefer Jesus. और लोग कहेंगे कि नहीं हमें यीशु मसीह I'll ask you a चाहिए। question. मैं आपसे एक If प्रश्न, when Jesus was there, अगर यीशु यहाँ होते, when Jesus was in Jerusalem, जब यीशु मसीह यरूशलेम में थे he was not in Jericho. तो वो यरीको में नहीं हो सकते थे। When he was in Jericho, जब वो यरीको में होते he थे was not in Bethany. तो वो बेथनी में नहीं हो सकते थे। When he is talking to in Bethany, जब वो बेथनी में लोगों से बात when कर रहे he is हैं, in Martha, Mary, Lazarus' house, जब मार्था मरियम और लाजरस के घर में he हैं, cannot be in the neighbor's house. तो वो पड़ोसी के घर में नहीं हो In सकते Bethany, neighbor's house, you cannot be. और पड़ोसी बेथनी के घर में नहीं हो सकते। Yes. You agree with me? Because he became a man. क्योंकि वो मनुष्य बना। He says, now I'm going to go up. अब मैं ऊपर जाऊंगा I will send the helper. और मैं एक सहायक को भेजूंगा। On the day of Pentecost, पेंटिकोस्त के when the दिन 124 people were praying, जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे the same Jesus came as the Holy Spirit. और वही यीशु पवित्र आत्मा के रूप में आया And suddenly now, और अब अचानक से there are 120 mini Jesus standing there. और अब 120 जो है वो यीशु मसीह के छोटे छोटे And they went all over. और वो अलग अलग जगह पर That means गए। same time, उसी एक ही Jesus समय was in Jerusalem, पर एक ही समय में यरूशलेम में Jesus was in Jericho, यरीको में थे Jesus was in Galatia, और यीशु मसीह गलीतिया he was in में थे Ephesus. एफिसिया में You थे name the country, he was there everywhere. और कोई भी देश का नाम बोले On this Sunday, आज के he is दिन in our church. वो हमारी कलीसिया में He is in है every church, people are worshipping. और जिस भी कलीसिया में लोग आराधना कर रहे हैं वो He वहाँ is है there all over the nation, wherever they are worshipping. और सारी दुनिया में जहाँ भी लोग आराधना कर रहे हैं वो So, वहाँ which है। is advantageous? क्या भला है Him coming physically or coming as the Holy Spirit? और शारीरिक में होना या पवित्र आत्मा का होना। Oh, hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Church, understand. कलीसिया इस बात को समझे It is advantage that Jesus went. ये भला है कि यीशु मसीह गए And he sent the Holy Spirit. और उसने पवित्र आत्मा को भेजा। You know something? Jesus physically, if he was there, अगर यीशु मसीह शारीरिक तौर पे होते right now on this day, आज के दिन हमारे बीच में when Raju Konari is in trouble, अगर राजू कुर्नेलिस कोई समस्या में Jesus है standing and talking to Raju Konari. तो यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं Now Rambabu is in, I need some financial problem. I need some money. I'm sitting in Bombay. और मैं बॉम्बे में बैठा हूँ मेरे He पास- can't help me वो मेरी मदद because नहीं he is कर- busy with Raju. क्योंकि वो राजू के साथ But व्यस्त है। today, लेकिन आज Raju is saying, Lord, I want you to help me here. Rambo is saying, Lord, I'm here. He is here, he is there. और अगर आप कहें कि प्रभु मुझे जरूरत है तो वो वहाँ भी है यहाँ भी है Lord, Rambo is asking, Lord, I need urgently 1 lakh for the crusade. I want, Lord. I'm praying. In Africa, somebody in Nigeria, somebody praying, Lord, I want $100,000. And Uganda, somebody is praying. America, somebody is praying. And same time, everybody needs supplied. और मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ कोई अफ्रीका में युगांडा में प्रार्थना कर रहा है Why? क्यों He is there everywhere. क्योंकि वो सब जगह है हालेलुया। But the sad part is, लेकिन दुखद बात यह है church has neglected the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को नकार दिया है कलीसिया ने We didn't नकारा नहीं, उसको तिरस्कार किया, उसको निर्लक्ष्य किया. We didn't reject him, we only neglected him. उस पर ध्यान नहीं दिया We said,
Oh, Holy Spirit, thank you. May the grace of Jesus Christ, love of God, fellowship be with you. Amen. Even before they, amen, they're getting up, going away. Amen. We have neglected the Holy Spirit. और हमने पवित्र आत्मा पर ध्यान नहीं दिया है। No wonder. इसीलिए No wonder why we are unable to enjoy every privilege Jesus provided on the cross for us. और इसलिए यीशु मसीह ने जो भी हमारे लिए सुलभ किया है हम उसका लुत्फ नहीं उठा सकते। Hallelujah. Put John 16 again. But I tell you the truth, it's your advantage that I go away. If I do not go away, the helper will not come. But if I go, I will send him to you. Everybody say with me. He went. He went. He sent. He sent. Say he went. He went. He sent. He sent. And let me tell you, somebody he sends, don't neglect that person. Whether Prime Minister sends somebody, you better respect that person. Whoever the person is, if the person sent by the Prime Minister, you better respect the person. And now Jesus is saying, I go, I send. When he sends somebody, you better know the value of the person whom he has sent. Say with me, he went. He went. He sent. He sent. Say it again, he went. He went. He sent. He sent. Oh yeah, continue. And when he comes, he will come to the world concerning sin, righteousness, and judgment. Concerning sin, because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I go to the Father and you no longer see me. Continue. And concerning judgment, because the ruler of this world is being judged. I have many more things to say to you, but you cannot bear them now. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. For he will not speak of his own initiative. Whatever he hears, you speak, he will disclose to you what is yet to come. He will glorify me, for he will take of mine and will disclose it to you. Now, let's go back. Jackson, put the same scripture, John 16, 8 to 11 in Message Bible. I'm just giving introduction today. When he comes, he will expose the error of the godless world's view of sin, righteousness, and judgment. Continue. When he will show them that their refusal to believe in me is the basic sin. Let me go back to verse 8 again. Go back in American Standard Version. And when he comes, say when he comes. When he comes. Ask me, what will he do? Listen carefully. When he comes, he will convict the world concerning sin, righteousness, judgment. Everybody says sin, righteousness, judgment. Three things he'll convict the world. And when he comes, he'll convict the world concerning sin, righteousness, judgment. Three things he will convict. Everybody say three things he will convict. Okay. He'll convict the world of sin, righteousness, judgment. Three things. How many of you, I'm asking this question, how many of you ever feel, I'm not talking about sinner, I'm talking to you as a child of God, that when you make a mistake, you felt the Holy Spirit convicting you? Can you see that? I have a good news to tell you. You were wrong. I have good news to tell you. You were wrong. You were taught wrong. We were taught wrong. The Holy Spirit never came to convict a believer of sin. He came to, when he comes, he'll convict the world. Read the word carefully. Read the word carefully. He will convict the world. Listen carefully. Again, get the scripture. He'll convict the world concerning not sins. There are different sin and sins. Sin and sins are different. There is only one sin. I'm telling you, do you know what is one sin that takes people to hell? Not your smoking, not your drinking, not your anger, not anything. One sin that takes you to hell is not believing in Jesus Christ. That is called the sin. The sin. It's not sins. It's called the sin. Hallelujah. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ವಿಶ್ವಾಸವು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸಾರೋಣವಾದಂತೆಯೇ ನಮಗೂ ಸಾರೋಣವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಕೇಳಿದವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಸಾರಿದ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯ ಸಾರಿದ ನಂತರ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾರಿದ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ, ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೆ, ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನೇ ಚಾಚಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಶಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ. ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಲಿ, ಕುರುಡ ಕಣ್ಣು ನೋಡಲಿ, ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿ ಗುಣವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲುಬುಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣವಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡ್ಡೆ ಮಾಯವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಿರುತ್ಸಾಹ, ಕುಂಗಿದ ಹೃದಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ, ಯಾರಿಗೆ ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ದುಃಖದಿಂದಿದ್ದಾರೋ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಾಡಕರ್ತೇನೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಪ್ಪ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಲಗಳ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಪ್ಪ. ಕತ್ತಲಿರುವ ಕಡೆ ಬೆಳಕುಂಟಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದರ ಕರ್ತನೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪ. ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆಗಳು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಸೇವಕರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ತನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಉತ್ತರ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಗುಣವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಅಗೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಚಾನೆಲ್, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್.